supply curve, or changes in quantity supplied or changes in supply, and these all about the topics. So we discussed that movement along the supply curve leads to upward movement, that is called expansion in supply, and downward movement, that is called contraction in supply. So now today lecture we discuss about the difference between all these topics. With the help of these topics, with the help of these differences, we easily understand the meaning of all these topics. Okay. So the differences between the movement along the supply curve and shift in supply curve, which we discussed today, changes in quantity supplied and changes in supply, expansion in supply and increase in supply, and the last one is contraction in supply and decrease in supply. So first is movement along the supply curve and shift in supply curve. Make a chart like 3 columns, basis, a point of differences. Next is movement along the supply curve, and the third one is shift in supply curve. So write down, first point of differences is meaning. What is the meaning of movement along the supply curve and shift in supply curve? When the quantity supplied in movement along the supply curve, right now, when the quantity supplied changes due to change in price, when the quantity supplied changes due to change in price, comma, keeping other factors constant, keeping other factor constant. अगर प्राइस के चेंज होने पर हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी चेंज होती है, इफ क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस, अगर हमारे प्राइस के चेंज होने पर हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होती है, चेंज होती है, एंड अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, और बाकी फैक्टर्स क्या रहते हैं, हमारे कांस्टेंट रहते हैं, देन इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. Now write down shift in supply curve. When the supply changes due to change, when the supply changes due to change in any other factor, due to change in any other factor other than the own price, other than the own price. अगर हमारी क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होती है किसी भी रिलेटेड फैक्टर की चेंज होने पर, इफ क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन एनी अदर फैक्टर, अगर किसी भी अदर फैक्टर की चेंज होने पर हमारी क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है और ओन प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आता, देन देयर इज अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व. तब हम उसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में क्या था, देयर इज अ क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस, यानी कि प्राइसेस के चेंज होने पर जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती थी तो हम उसे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व बोलते हैं, और जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है इसकी चेंज होने पर, अदर फैक्टर्स के चेंज होने पर, तब हम उसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज effect on supply curve.
इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व, यानी कि सप्लाई कर्व पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है। Write down the movement along the supply curve. The supply curve either upward, which is known as expansion in supply, ब्रैकेट में लिखिएगा upward expansion in supply, या तो वो upward को शिफ्ट होता है, ठीक है ना, अपवर्ड को मूव करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन सप्लाई, और डाउनवर्ड विच इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। हमारा जो सप्लाई कर्व है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, वो क्या होता है, या तो अपवर्ड को मूव करता है या तो डाउनवर्ड को मूव करता है। अगर अपवर्ड को मूव करेगा, इफ इट मूव्स फ्रॉम अपवर्ड, देन वी कैन से दैट इट इज एक्सपेंशन इन सप्लाई, and if it moves in downward, then we can say that this is contraction in supply. Next, write down the shifting supply curve. The supply curves is either rightward in bracket known as increase in supply, or leftward in bracket known as decrease in supply curve, So when we discuss about shifting supply curve, so the supply curve shift in rightward, which we known as increase in supply curve, or leftward, which we know that decrease in supply curve. या तो ये राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा या तो फिर लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। Next point of difference is reason. Write down movement along the supply curve. It occurs due to increase or decrease in the price of the given commodity. It occurs due to increase or decrease in the price of the given commodity. यानी कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कब होगा, जब हमारे कमोडिटी के प्राइसेस में क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी कि हमारे कमोडिटी के प्राइस जो है इंक्रीज होंगे या तो फिर डिक्रीज होंगे। ठीक है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, राइट डाउन, इट occurs due to change in other factors. शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कब होगा, जब हमारे अदर फैक्टर्स क्या होंगे, चेंज होंगे और प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। देन वी कैन से दैट शिफ्टिंग सप्लाई कर्व, लाइक चेंज इन द प्राइस ऑफ यूनिट, change in taxes, change in technology, etc. So it is clear what is the difference between the movement along the supply curve and shift in supply curve. Write down the next differences: change in quantity supplied and change in supply. Change in quantity supplied and change in supply. First point of difference is meaning. Write down change in quantity supplied. When the quantity supplied changes, when
the quantity supplied changes, keeping other factors are constant. When the quantity supplied changes due to change in price, due to change in price, जब हमारे प्राइसेस के चेंज होने पर हमारी क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई. राइट डाउन चेंज इन सप्लाई. When supply changes due to change in any factor other than the own price. When the supply changes due to the change in any factor other than the own price of the commodity. जब किसी भी अदर फैक्टर के चेंजेस होने पर हमारी सप्लाई चेंज होती है और प्राइस जो है हमारे कांस्टेंट रहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन सप्लाई. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व. इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कब अगर होती है, इट अकर्स व्हेन देयर इज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कब होगी, जब मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होगा. ठीक है ना. इट मींस दैट इट शिफ्ट आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड. Change in quantity supplied move upward or downward, and same change in supply occurs when there is shift in supply. It means that it's rightward or leftward. It shift from rightward or leftward. Movement along the supply curve and changes in quantity supplied, these both are the same. But you have to know what is the difference between the movement along the supply curve and shift in supply curve, or changes in quantity supplied or changes in supply. Okay. Third difference is reason. It occurs due to increase or decrease in the price of the commodity. अगर commodity के prices में changes होते हैं, increase or decrease होते हैं, then change in quantity supply. And it occurs due to change in other factors. और change in supply का होता है जब other factors में changes होते हैं. So it results in the point of differences between these both are the same, because changes in quantity supplied occurs when there is a movement along the supply curve, and change in supply occurs when there is a shift in the supply curve. Next difference is expansion in supply. Expansion in supply and increase in supply. First point of differences is meaning. Expansion in supply, write down, when the quantity supplied rises, due to an increase in the price, keeping other factors are constant. एक्सपेंशन इन सप्लाई कब होता है, जब हमारे प्राइसेस के इंक्रीज होने पर हमारी क्वांटिटी सप्लाई में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एंड अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, और हमारे बाकी के अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. देन इज नोन एज एक्सपेंशन इन सप्लाई. व्हेन देयर is an increment in the quantity supplied due to the increase in the price of the commodity and the other factors are constant, that is known as expansion in supply. Second difference is tabular presentation.
the price increases, then the quantity also increases and the other factors remain constant. अगर प्राइस चेंज होते हैं तो हमारी क्वांटिटी भी क्या होगी, चेंज होगी और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, दैट इज नोन एज एक्सपेंशन इन सप्लाई. Same there, increase in supply. Write down. Increase in supply refers to a rise. Increase in supply refers to a rise in the supply of a commodity caused due to any other factors other than the own price of the commodity. Increase in supply occurs when there is a change in quantity supplied due to the change in the other factors. जब हमारी क्वांटिटी हमारे अदर फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं, उनकी वजह से हमारी क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होती है, चेंज होती है, बट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट. और हमारी कमोडिटी के प्राइस में क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. तो क्या होता है, इंक्रीज इन सप्लाई कर्व. ओके, its tabular presentation is like this. It means किसी भी अदर फैक्टर्स के चेंज होने पर हमारी क्वांटिटी तो क्या हो गई, चेंज हो गई, बट द प्राइस रिमेन कांस्टेंट. लेकिन प्राइस हमारे क्या है, सेम है. That is known as increase in supply. First point of difference is meaning, second is tabular presentation, third is effect on supply curve, यानी कि इसका हमारे सप्लाई कर्व में क्या इफेक्ट पड़ा. First, in expansion in supply, there is an upward movement. Expansion in supply में सप्लाई का हमारा कहाँ मूव करता है, अपवर्ड की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ, राइट. अपवर्ड मूवमेंट. ओके, increase in supply, there is a rightward shift of supply curve. Change in supply, increase in supply में हमारा supply curve कहाँ शिफ्ट होगा, rightward में, right. प्राइस शुड बी द सेम, प्राइस सेम रहेंगे और क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. क्यों, क्योंकि अदर फैक्टर्स के चेंज होने पर. सो ये कहां शिफ्ट हो गया, हमारा सप्लाई का राइट पॉइंट में शिफ्ट हो गया. सो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज, आप इसको ग्राफिकली भी क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं. Last difference is reason. Expansion in supply कब हुआ, जब हमारे प्राइसेस क्या हुए, इंक्रीज हुए. So we can say that expansion in supply occurs when due to increase in the price of the commodity, or increase in supply occurs when due to increase in the factors of production or change in the factor of production. The last difference is contraction in supply and decrease in supply. Contraction in supply and decrease in supply.
First meaning, when the quantity supplied falls, when the quantity supplied falls due to decrease in the price, due to decrease in the price, and other factors remain constant, and other factors remain constant. अगर प्राइसेस के फॉल्स होने पर, अगर प्राइसेस के फॉल्स होने पर हमारी क्वांटिटी सप्लाइड की क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है, और अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं, हमारे कांस्टेंट रहते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। When there is fall in the price of the commodity, so the quantity supplied also falls, but the other factors remain constant. This is known as contraction in supply. Okay, next, decrease in supply. When quantity supplied falls due to the due to the changes or decrease, due to the changes of any other factor, due to the changes of any other factor, यानी कि हमारे किसी भी फैक्टर्स के चेंज होने पर अगर हमारी क्वांटिटी सप्लाई क्या होती है, डिक्रीज होती है, और हमारे प्राइस जो है कांस्टेंट रहते हैं, देन वी कैन से दैट दिस इज नोन एज डिक्रीज इन सप्लाई। Next point is, point of difference is tabular presentation. Tabular presentation. When price is 12, then the quantity is 150. But if price falls, अगर price क्या हो जाते हैं, fall हो जाते हैं, then हमारी quantity क्या हो जाती है, fall हो जाती है, ठीक है ना? So this is known as contraction in supply. It means that due to the fall in the price, the quantity supplied also decreases. यानी कि हमारे प्राइस की डिक्रीज होने पर हमारी क्वांटिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। इसको हम ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस पॉइंट लाइक दिस फॉर क्वांटिटी। When price is 12, then the quantity is 150. If price down, अगर price क्या हो जाते हैं, fall हो जाते हैं, down हो जाते हैं, then quantity also decreases. तो हमारा सप्लाई पर कहाँ शिफ्ट कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, डाउनवर्ड, कहाँ मूव कर रहा है, डाउनवर्ड। एक्सपेंशन इन सप्लाई में कहाँ मूव कर रहा है, अपवर्ड को, और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में कहाँ करेगा, डाउनवर्ड को मूव करेगा। सेम इन डिक्रीज इन सप्लाई, क्वांटिटी डिक्रीजेस ड्यू टू द डिक्रीज इन द अदर फैक्टर्स, ठीक है ना? क्वांटिटी डिक्रीज होगी जब अदर फैक्टर्स भी क्या होंगे, हमारे उनमें चेंजेस आएंगे, डिक्रीज होंगे, इन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट, और प्राइस हमारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। So the curve is when price square in the quantity is 150. Okay. Then the price are the constant in decrease in supply. The price क्या रहते हैं, constant रहते हैं. Quantity supply is decreases.
So we can say that supply curve shift from leftward. Supply curve कहाँ shift हो गया? Leftward की तरफ shift हो गया. First point of difference is meaning. Second, tabular presentation. Third is graphical presentation. Fourth is effect of supply. Effect on supply curve. In contraction, there is a downward movement. There is a downward movement. And in decrease in supply, there is a leftward shift of supply curve. There is a leftward shift. Last point of difference is reason. Contraction in supply occurs due to the decrease in the price of the commodity. Contraction in supply कब होता है? जब हमारी commodity की price भी क्या होती है? Decrease होती है. And decrease in supply occurs due to change in the other factors. Or we can say that increase in the other factors. Clear? These all 4 points of differences. So in next lecture we discuss about the new topic, which is price elasticity of supply. This is a very important topic, so don't miss the class. Thank you class for today. Goodbye.